Hello students, we are continuing the same lesson, that is number systems. In previous videos we discussed about exercise 1.3 up to second question. Now we are going to see the third question. Suppose if we divide 10 divided by 3, the answer will come 3.333. 3 3s are 9, again 3, again 9, 1 and so on. तो स्टेप 1 में और यहाँ पे या स्टेप ए कंसिडर करो आप और स्टेप बी कंसिडर करो, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है. और इफ यू टेक 1 बाय 3 भी डिवाइड करो, वी कैन गेट 0.333. मीन्स इस 3 इज गेटिंग रिपीटेड ओवर हियर. तो 10 बाय 3 अगर डिवाइड करेंगे तो इट कम्स 3.333 एंड सो ऑन. इट मीन्स 3.3 बार. दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो डेफिनेटली रैशनल है. सपोज 10 बाई 3 गिवन है, तो अपन इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये फाइंड किया. क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है. इफ 3.3 बार गिवन है, जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू p by q फॉर्म, मींस वी हैव टू गेट दिस आंसर, राइट. तो 3.3 बार है तो 10 बाई 3 उसका आंसर आना चाहिए. लेट्स सी दैट एग्जाम्पल. तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, एक्सप्रेस 3.3 बार in p by q form, means we have to find this answer जो p by q के form में, right. Now we'll write the first question, that is expressed in p by q form. First bit is 0.6 bar. The method is, or we will take that example 10 by 3. जो textbook का नहीं question, it's not a textbook question. I will this is a star one, that is 10, that is 3.3 bar. Now we are going to convert that into p by q form. First, suppose this, let x is equals to 3.3 bar. First, what we are going to see after decimal point, just after the decimal point, ये जो digit है, तो हाउ मेनी डिजिट्स पे ये बार लगा हुआ है, यू हैव टू सी दैट. एक ही डिजिट पे है, राइट. तो दैट्स वाई इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 33.3 बार. हाउ इट कम्स, सी 3 बार मीन्स 3.3333 एंड सो ऑन. व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 10, दिस डेसिमल पॉइंट गेट शिफ्टेड बाय 1 टू राइट साइड. तो 33.333 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. 3 डिजिट जो है अप टू इन्फिनिटी है. तो 33.3 बार अगेन वी कैन राइट. दैट्स व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 10, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स 33.3 बार, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस टू दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस 2. नाउ सबट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन. देखो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट पे बार है, यहाँ पे बार है, तो सबट्रैक्ट कर देना इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो 10x माइनस x लार्जर में से स्मॉलर सबट्रैक्ट. 33.3 बार माइनस 3.3 बार. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट कम्स 30.0 एंड दिस इज 9x. This is equals to 30 divided by 9. On cancelling, it will be 10 by 3. That's why 3.3 bar means 10 by 3. This is the p by q form. So lastly you can write 3.3 bar is equals to 10 by 3. This is the p by q form of 3.3 bar, that is 10 by 3. Got it? तो previous exercise में अपन ने 10 by 3 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म फाइंड किया था. अब इस एक्सरसाइज में जस्ट 3. इस क्वेश्चन में स्पेशली 3.3 बार को 10 by 3 में आपको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था. दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक वन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस. फर्स्ट बिट ऑफ इट, that is 0.6 bar.
let x is equals to 0.6 bar. जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो is equals to 6.6 bar. How it comes? 0.6 bar means 6666 and so on. When you multiply it by 10, एक ही digit पे बार है, that's why we are multiplying by 10. It comes 6.666 and so on. It comes 6.6 bar. That's why I'm writing this is 6.6 bar. अदरवाइज तुमको एक कंटिन्यू लिखना है तो ऐसे भी लिख कर सकते हैं आप 0.666 एंड सो ऑन देन 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन गेट दिस वन. ओके, गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 और 10x minus x is equals to 6.6 bar minus 0.6 bar. Subtract it. It comes 6 is equals to 9x. This implies x is equals to 6 by 9. On cancelling, it will be 2 by 3. This implies 0.6 bar is nothing but 2 by 3. मतलब आप अगर 2 by 3 को डिवाइड करोगे तो you will get this answer. Right? तो रिवर्स डायरेक्शन में ये क्वेश्चन है कि 0.6 बार p by q के फॉर्म में आता है 2 by 3. Got it? In this way you can proceed. Now suppose if the question second question is just you have to express in p by q form 0.7 bar. 47 पे बार नहीं है. Now only bar is given on 7 only. 7 रिकर करता है यहाँ पे रिकरिंग. इन दिस केस फर्स्ट चेक करना डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है उस पे बार होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 गैप है, एक डिजिट जो है. फर्स्ट शिफ्ट दिस डिजिट टू लेफ्ट साइड. तो इसके बाद 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट पे बार नहीं. अगर इफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस 0.457 बार तो पहले आप इसको शिफ्ट करना इधर मल्टीप्लाइंग बाय 100. जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इस पे बार नहीं है तो पहले इसको शिफ्ट कर लेना. राइट, तो अपन पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं. जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 10 इट कम्स 4.7 बार. इसे इक्वेशन 1 दो, इसे नंबर मत दो, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज अपन इसमें जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर लाएंगे तो इट विल बी समवॉट इजियर. अगेन एक बार और करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट करना है. मैं सॉरी इसको अपन और एक बार 10 से मल्टीप्लाई सो दैट एक 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा. अगेन मल्टीप्लाई बाय यू कैन राइट हियर मल्टीप्लाइंग बाय 10 हियर. यहाँ अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि इस पे एक डिजिट पे बार है. विदाउट डिजिट था उसको शफल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया. नाउ वी आर गोइंग टू शफल दिस डिजिट टू लेफ्ट साइड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 अगेन. What it will be? It will be 100x now. 100x is after shuffling this 7 bar. Second equation. Now यहाँ पे जो डिजिट है यहाँ पे वही है, तब इनका सब्ट्रैक्शन करना है. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो 100x माइनस 10x that is equals to 47.7 bar. मैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. that is 4.7 bar. Subtract it. It will be 43.0. that is equals to subtraction 90x. So this implies x is equals to 43 by 90. If we divide 43 by 90 then you will get 0.47 bar. This implies 0.47 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म में ये होता है. जीरो पॉइंट 47 बार. 7 पे बार है, 47 पे बार नहीं. राइट, सिर्फ 7 डिजिट पे बार. इट इज 43 by 90. गॉट इट.
bit of this question number 3. This is the third bit. Next question is 0.001 bar. मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद ऑल 3 डिजिट्स पे ये बार है, तो यू कैन गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज यहाँ तीनों डिजिट्स पे बार है ना, जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद तीनों डिजिट पे बार है, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन 1. अब नाउ 3 डिजिट्स आर देयर टू शफल टू लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000. 3 डिजिट है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई. आफ्टर मल्टीप्लाइंग it will be 1000 x is equals to, shuffle करो, it comes 001.001 bar. ये not required this one, तो नहीं लिखे जो कोई प्रॉब्लम नहीं. 0 ये शफल कर दिया ना आपने, तो इसमें टू द लेफ्ट हैंड ये इंटीग्रल पार्ट में लेफ्ट के जीरोस का कुछ रोल नहीं. तो नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. 1000x minus x is equals to 1.001 bar minus 0.001 bar. We are going to subtract this. Subtraction के बाद this will come 999x is equals to 1.000, or you can write only 1, no problem. ये तो subtract with 0.0 आ जाए. What is x then? X is equals to 999. This implies 0.001 is nothing but 1/999. अगर MCQ में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 0.3 बार जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अगर बार दिखते तो डायरेक्ट आंसर लिख देना. यहाँ पे 0 होना मस्ट है, बट यहाँ अगर 0 है और जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द बार इज गिवन ऑन द डिजिट, तो यहाँ पे सीधा आंसर 3/9 आता है, राइट. अगर सपोज 1-3 बार दोनों डिजिट पे बार होना चाहिए जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ऐसा नहीं कि 0.413 पे बार, डायरेक्ट नहीं. यहाँ पे जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बार इज गिवन ऑन ऑल डिजिट्स, तो डायरेक्टली यू कैन 1-3 है तो यहाँ पे 1/99. 2 डिजिट्स है तो 99, 1 डिजिट है तो ओनली 3/9. ओके 23 तो 23/99. अगर सपोज 2-3-4 पे बार है तो डायरेक्ट 2-3-4/999. 3 डिजिट्स है ना, 3 डिजिट पे बार है तो 999. लेकिन कब? जब यहाँ 0 है एंड जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट्स आर गिवन और उस तीनों पे बार है. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये रॉन्ग वे रहेगा, ये दिस इज रॉन्ग आंसर फॉर इट. सिर्फ 3-4 पे अगर बार है दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर. तो उसको कैलकुलेट ही करके देखो, दैट विल बी बेटर. ओके, दिस completes question number 3. We will see the fourth question. Express 0.99999 ... right, in p by q form. For first we'll convert that into p by q form, later we'll see the rest part of that question. Are you surprised by your answer? We'll see the answer first. This means x is equals to 0.9 bar. Okay, how many digits are there on which the bar is given? So only 1 digit है, तो multiply by 10. Okay, so what it will be, 10x is equals to 9.9 bar. ये कैसे है? Actually 0.999 है ना, अब 9 रिपीट कर रहे हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करे दो. जब यू मल्टीप्लाई 10 तो ये डिजिट इधर शिफ्ट, मतलब डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा, तो 9.9999, तो इन्फिनिटी तक ये डिजिट्स देना है. इसलिए अगेन यू कैन राइट 9.9 बार. तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग, तो 0.9 बार को अपन 9.9 बार, बिकॉज इसको ऐसे फॉर्म में लिखना. दिस
this is nothing but 0.9 bar. So directly you can write 9.9 bar. Okay, just see the second one. Now subtract it. Equation 2 minus equation 1. Equation 2 minus equation 1. That gives 2 minutes. Equation 2 minus equation 1, we are subtracting. 10x minus x is equals to 9.9 bar minus 0.9 bar. It will be 9. Here also 9x. This is 9 by 9. X is equals to 1. Now see the complete question. Express 0.9999 and so on in the form P by Q form. We have expressed that in P by Q form. Are you surprised your answer? Yes, at a glance we are surprised with our answer yet. At our answer. Actually ये ऐसा क्यों सेंस मतलब ये होता है बिकॉज अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे इफ वी ऑब्जर्व तो यहाँ पे 0.999 ये जो डॉट 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 गोज फॉर एवर है, मतलब ये 999 तो इन्फिनिटी तक है ना, तो इसमें जो 1 ये अपना आंसर 1 आया ना, इसका 1 और 0.9 में नो गैप इज देयर, इसमें गैप ही नहीं रहता क्योंकि इतने क्लोजली जाता है 1 के तो उसमें गैप कुछ बचता ही नहीं। तो इसलिए याद रखो कि 0.9999 जो इन्फिनिटी तक है और 1 में गैप ही नहीं बचता है, दैट्स व्हाई दिस टू आर इक्वल, right? So there is no gap between 1 and 0.999, right? Hence they are equal, इसलिए 1 आ रहा है, समझ में? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक 99 एक्सटेंड कर रहा है और 1 और लास्ट में ये 1 के इतने क्लोजली आ जाता है कि उस दोनों में कुछ गैप ही नहीं बचता है, तो इसलिए 0.999 मीन्स इक्वल टू 1. ओके, rest we'll see in the next video. Thank you.